Now we are going to get discuss about the Hooke's law and modulus. So first of all, what is Hooke's law? So according to Hooke's, stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. So stress is equal to E into strain, where E is a constant and this constant is come in the elastic topic. So this is known as elastic coefficient. Okay, elastic coefficient of the body. So according to this, E equals to stress upon strain. ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक कोफिशिएंट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, so this is equals to the stress by strain, or we can say that the coefficient of elasticity is equals to the ratio of stress and strain. So according to Hooke's, stress of any body is directly proportional to the strain. हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेस जितना हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उस पर चेंज आएगा. तो चेंज जो है वो स्ट्रेन है और एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज स्ट्रेस है. सो वी कैन से दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन अ न्यू कांस्टेंट विल कम, दैट इज नोन एज coefficient of elasticity E. So according to this, E equals to stress over strain. Okay, and now its unit also will be Newton per meter square, and stress is unitless, so this unit is Newton per meter square, and dimension also ml minus 1 t minus 2. All types of the coefficient of elasticity. Okay, and there are also three types, क्योंकि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, तो जितने ही टाइप के स्ट्रेस थे, जितने टाइप की स्ट्रेन थी, उतने ही टाइप के ये कोफिशिएंट भी होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इलास्टिक कोफिशिएंट. Types of E means elastic coefficient. ओके, तो थ्री टाइप्स आ जाएंगे, और वो थ्री टाइप्स कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज यंग मॉडुलस, वाई से डिनोट करते हैं. सेकेंड वन इज बल्क मॉडुलस, बी से डिनोट करते हैं. एंड थर्ड वन इज रिजिडिटी मॉडुलस, और इसको ईटा से डिनोट करते हैं. ओके, तो ध्यान रखिएगा इन सब के यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सबकी डायमेंशन ml माइनस 1 t माइनस 2 जो स्ट्रेस की थी, क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यंग मॉडुलस. सो फर्स्ट इज दिस. अब देखिएगा, हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि जिस सीक्वेंस में स्ट्रेस और स्ट्रेन है उनको उसी सीक्वेंस में लर्न करिएगा. उसका बेनिफिट क्या होगा कि देखिएगा, अब हमने यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो थे, स्ट्रेस थी 3, पहला था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फिर था नॉर्मल स्ट्रेस, फिर था टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसी तरीके से स्ट्रेन भी थी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमिक स्ट्रेन, एंड थर्ड वन इज शियरिंग स्ट्रेन. ओके, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर वाला हम मॉडुलस डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर का स्ट्रेस और फर्स्ट नंबर की स्ट्रेन का रेशियो. ओके, अब जब हम सेकंड नंबर वाला बल्क मॉडुलस डिस्कस करेंगे तो सेकंड नंबर का स्ट्रेस और सेकंड नंबर की स्ट्रेन का रेशियो हो जाएगा सेकंड नंबर वाला मॉडुलस, एंड थर्ड नंबर की स्ट्रेस और थर्ड नंबर का स्ट्रेन का रेशियो जो होगा वो थर्ड नंबर का मॉडुलस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा. सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस फॉर द लर्निंग ऑफ दिस मॉडुलस. सो लेट मी डिस्कस हियर यंग मॉडुलस. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू द, अकॉर्डिंग टू दिस, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ
longitudinal stress over longitudinal strain. Okay, this is the basic formula of Young modulus. So now let me discuss. This is a rope whose initial length is L. Whenever we hang some weight in this wire, let this weight is mg, then there will form some increment of this length of the wire, that is small l or delta L. Okay, let me consider its area is pi r square, cross sectional area. This wire is like this. Okay, so it's this part is a cross sectional area, that is pi r square. Okay, so longitudinal strain, इसके लैंग्वेज क्या होगी? Let a rope whose initial length is L and its radius is small r, or its cross sectional area is pi r square. Whenever we hang some weight mg on it, then it changes their length like delta L. Okay, so longitudinal stress is equals to force upon area, that means mg upon pi r square, and longitudinal strain is equals to change in size. अब यहाँ पर लेंथ के फॉर्म में है तो लेंथ डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ एल है. ओके, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट y equals to f by a upon delta L upon L. So we can write this f by a into L upon delta L, और y equals to f की वैल्यू mg भी लिख सकते हैं into L upon a की जगह pi r square भी लिख सकते हैं. So this is the value of Young modulus. Okay, so let a wire whose original length is L and its radius is small r, or its cross sectional area is pi r square. Whenever some weight mg is hanged on it, then its change in length of this wire becomes delta L. So longitudinal stress is F by A, that is also equals to mg by pi r square, and longitudinal strain is delta L by L. So by the equation first, you are putting the longitudinal stress and strain both. So we will obtain this formula y equals to mgl over pi r square delta L. Okay. Now, bulk modulus. What is bulk modulus? So it is equals to the ratio of normal stress and volumic strain is called coefficient of bulk modulus. Okay, so this is equals to B equals to normal stress upon normal strain. Okay, let me consider here this is a container in which fits some liquid like this, whose initial volume is V. Whenever normal pressure applied delta P, then here loss in volume form delta V. Okay, loss in volume, यानी चेंज जो होगा वॉल्यूम में कितना हुआ, dV delta V. Okay, so according to this we can let some liquid which is filled in a container like this, whose initial volume is V. Whenever normal pressure, normal stress applied on this, so
that is delta P. So here lapse of the volume is delta V और loss in the volume is delta V. जैसे हम इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कुछ लिक्विड बाहर आ जाएगा, इतना मतलब वॉल्यूम में लॉस होगा, तो हम इसी वजह से इसमें निगेटिव सिंबल भी यूज करेंगे। आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ये निगेटिव सिंबल ये शो करेगा कि यहाँ पर लॉस इन वॉल्यूम हुआ है। ओके, सो नॉर्मल stress also is equals to it's a part of force, so normal stress that is equals to delta P, and volumic strain is equals to minus delta V upon V. Change in size upon ओरिजिनल साइज, ऐसे हमने करके डिफाइन किया था स्ट्रेन के लिए। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम से रिलेटेड है तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा, और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम में लॉस हुआ है जब हमने इतना नॉर्मल प्रेशर यूज किया है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सो V इज इक्वल्स टू delta P upon minus delta V upon V, so it will be equals to minus delta PV upon delta V. This value is the equal to the Young modulus, and in this point we can also say that the compressibility K is equals to 1 upon V. The reciprocal value of the bulk modulus is known as compressibility. Okay, so this is K, and K is equals to the 1 by B. Okay, now let me discuss about the rigidity modulus. Rigidity modulus, so it is equals to the ratio of tangential stress upon shearing strain, okay, is equals to the rigidity modulus. So let me discuss here. This is a cubical body whose area of each surface is capital A. Okay, let the area of this surface is A, and we can also say that each surface is area capital A. Whenever we apply this tangential force on the upper surface, that is F, whose area is A, so it bends each surface with an angle theta. अगर ये थोड़ा सा आगे लुढ़केगा तो इसकी सभी सरफेस उतना ही आगे को बेंड हो जाएंगी. So in this way each surface changes their position with an angle theta. So this is the theta is shearing strength. Okay, देखिएगा ये कोई क्यूबिकल बॉडी थी, इस पर हमने इसके कोऑर्डिनेट एरिया ए पर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया. ऐसे टेंजेंशियल मतलब टच करते हुए, स्पर्श करते हुए ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या होगा, ये लुढ़कना स्टार्ट करेगा ऐसे. तो अब ये पूरा कंबाइंड है एक साथ. तो जैसे ही इसका थोड़ा सा पोर्शन बेंड होगा, आगे झुकाव में आएगा, इंक्लिनेशन में आएगा थीटा, तो सभी साइड एक दूसरे से अटैच, सब साइड थीटा एंगल ही बेंड हो जाएंगे, मींस शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा. सो टेंजेंशियल, लेट अ क्यूब दिस A B C D E F G H whose area of each surface is A. Whenever F force, tangential force applied on the upper surface, then each surface inclined or bend with an angle theta, and finding the new position D dash and this is I dash, C dash, F dash. Okay, these are the new positions. So tangential stress is equals to F upon A, and shearing
strain is equals to theta. So by equation first, eta equals to F by A upon theta. So eta equals to F upon A into theta. So this will be equals to the rigidity modulus. Okay.